Hello students, welcome to my video lectures. First Brahmanad. Om Shanti Shanti Shanti. In last class we discussed equation of the plane passing through three non-collinear points and equation of the plane in intercept form. Okay, today we are going to discuss plane in space of lecture 3. Okay, and also distance of a point from a plane. Distance of a point from a plane. Suppose this is a plane. This is a plane. Okay, and this is a point in space having position vector a vector. Okay, this is normal n vector, and this is the foot of the perpendicular drawn from the point P. L is the foot of the perpendicular drawn from the point P, having position vector L, small l vector, having position vector small l vector. So we need to find the length PL. Okay, let the equation of the given plane. Equation of the given plane be n vector dot r vector is equal to d. This is equation 1. Okay, let p bracket a vector be any point on space, any point on space. हमको ए लेंथ थोड़ा बाहर करिए अपने ए लेंथ है ना, एनी पॉइंट ऑन स्पेस. ओके, लेट एल बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the point, drawn from the point P to the plane. Okay, let the position vector of L is small l vector. Okay, small l vector. Since L lies on the plane, so equation 1 becomes, जेहेतु L टा कहाँ पर अच्छी, प्लेन ऊपर अच्छी, तो L रो पोजिशन वेक्टर साटिस्फाई करियो काहाकू, प्लेन रे इक्वेशन को साटिस्फाई करियो. मीन्स L रो कोऑर्डिनेट टा साटिस्फाई करियो काहाकू, प्लेन रे इक्वेशन को. तो अर्थ n vector dot L vector is equal to d, equation 2. मीन्स r vector देखा आम कौन पकड़ा, स्मॉल l vector पकड़ा. दिस इज इक्वेशन 2. ओके, देयरफॉर pl vector is equal to, अच्छा हियर n vector है कौन, हियर n vector is the normal to the plane, normal to the plane. Okay, therefore pl vector is equal to pl vector is equal to position vector of L minus position vector of a p. So this implies pl vector is equal to, this is L vector minus a vector. So this implies L vector is equal to a vector plus pl vector. So L vector, तो put, this is equation 3, put 3 into, तो n vector dot L जगह कौन पड़ो, a vector plus pl vector is equal to d. Okay, तो implies n vector dot a vector plus n vector dot pl vector is equal to d. तो implies
n vector dot pl vector is equal to d minus n vector dot a vector. Okay. अच्छा, this implies this is mod n into mod pl cos theta, और theta the angle between n vector and pl vector. Okay. Is equal to d minus n vector dot a vector. तो n vector is parallel to pl vector, दीटी जाक परपेंडिकुलर. तो if n vector and pl vector are unlike vector, if n vector and pl vector are unlike vector, then theta is equal to pi. So this implies cos pi is equal to -1. This implies mod n vector into mod pl vector into -1 is equal to d minus n vector dot a vector. Okay. So implies mod n vector into pl vector mod is equal to n vector dot a vector minus d. Implies mod of pl is equal to n vector dot a vector minus d divided by mod of n vector. Okay. If n vector and pl vector are like vector, then theta is equal to 0 degree. So this implies cos 0 is equal to 1. Therefore mod n vector into mod pl vector, cos 0 means 1, cos 0 is equal to d vector minus n dot a vector. So implies pl vector mod is equal to d vector minus n vector dot a divided by mod n, or minus of n vector dot a vector minus d divided by mod n. But pl is the length, pl is the distance, is the perpendicular distance. So pl mod is equal to mod of n vector dot a vector minus d vector divided by mod of n vector. Okay. So this is the distance. So shortest distance, perpendicular means shortest distance. So therefore perpendicular distance from the point P bracket a vector on the plane to the plane r vector dot n vector is equal to d is n vector dot a vector means r जगह a पड़ी जाउची minus d लेफ्ट साइड आइछ by mod of n whole रो mod. Okay. This is the formula. Okay. In vectorial form. In Cartesian form देखे Cartesian form n vector means ai plus bj plus ck. Okay. R vector xi plus yj plus zk. Okay. A vector x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap. है तो mod of n means mod of ai plus bj plus ck is equal to square root of a square plus b square plus c square. Okay. Therefore perpendicular distance from the point P having coordinate x1 y1 z1 to the plane
x plus by plus cz plus d is equal to 0 is n dot a कितना चला n dot a means ax1 mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by square root of a square plus b square plus c square. Okay, mod of ax1 put karo n dot a means ax1 plus by1 plus cz1 hela by mod of minus d means is equal to d thila ethi plane टा कौन is equal to d thila तो ये कौन आसीबो plus d divided by square root of a square plus b square plus c square. तो ये equation of the plane. Okay, sorry, this is the distance from the point to the plane. This is the plane, this is the point having coordinate x1 y1 z1. This is p, this is l, this is x plus by plus cz plus d is equal to 0. Okay, so this length is equal to mod of ax1 means x जगह x1 पड़ला y जगह y1 z जगह z1 तो ax1 plus by1 plus cz1 plus d रो mod divided by square root of a square plus b square plus c square. Okay, तो नोट मन रखो one perpendicular distance from the point P bracket a vector to the plane r vector dot n vector is equal to d is in vectorial form is n vector dot a vector r जगह पड़ला minus d रो mod by mod of n. Okay, 2 perpendicular distance from origin to the plane r vector dot n vector is equal to d is mod of d divided by mod of n. mod of d means it a डाला origin 0 ही होची तो mod of d by mod of n. 3 perpendicular distance from the point P bracket x1 y1 z1 to the plane x plus by plus z plus d is equal to 0 in Cartesian form is mod of x1 plus by1 plus cz1 plus d mod by square root of a square plus b square plus c square. 4 perpendicular distance from the origin means x1 y z 0 to the plane x plus by plus cz plus d is equal to 0 is mod of d by root a square plus b square plus c square. mod of d by root a square plus b square plus c square. Okay, a square plus b square plus कौन c square. mod of d by root a square plus b square plus c square. Okay, next 5 shortest distance means perpendicular distance between two parallel planes
planes in vectorial form. R vector dot n1 vector is equal to d1 and r vector dot n vector dot n vector is equal to d2 is mod of d2 minus d1 by mod of n vector. Because two vectors are parallel, their normals are also same, only constant term is difference. 6 in the vectorial form, in Cartesian form x plus by plus cz plus d1 is equal to 0 and x plus by plus cz plus d2 is equal to 0 is mod of d2 minus d1 by square root of a square plus b square plus c square. तो ये वाला डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स. शॉर्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मीन्स यही फॉर्मूला पकेबा. डिफरेंस बिटवीन देयर कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये दुटा सामान थिया पड़ो ना प्रपोर्शनल थिया पड़ो. जदि प्रपोर्शनल अच्छी तुम ये सामान करा पड़ो. मानक 3 6 है 3 अच्छी 6 अच्छी 2 अच्छी 4 अच्छी ये 5 अच्छी 10 अच्छी अर्थ प्रपोर्शनल मीन्स पैरेलल लगा. तो तलटा ऊपर जहाँ अच्छी तलटा से कर ना तलटा जहाँ अच्छी ऊपर से कर सेम करी कौन कर फर्मूला पकड़. ओके नेक्स्ट अनदर नोट 5 1 2 3 5 इक्वेशन ऑफ द प्लेन नोट का इक्वेशन ऑफ द प्लेन parallel to the given plane equation of plane parallel to the given plane r vector dot n vector is equal to d is r vector dot n vector is equal to d1 where d1 is constant to be calculated by the given condition है ये दुटा सेम खाली कांस्टेंट टर्मटा चेंज हम. तो कांस्टेंट टर्म d1 टा कांस्टेंट निहाई तार भैल्यू बाहर करने किसी एक्सट्रा कंडीशन दिहब से एक्सट्रा कंडीशन यूज कर कौन भैल्यू बाहर करवा. नेक्स्ट 6 इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म equation of the plane parallel to the given plane in Cartesian form plane x plus by plus cz plus d is equal to 0. It is a vectorial form. This is a vector form. It is Cartesian form है Cartesian form is x plus by plus cz plus d1 is equal to 0. d चेंज है d1 लिखा है where d1 is constant to be calculated by the given condition ओके. तो एक्स्ट्रा कंडीशन दिहब से कंडीशन यूज करें कौन करिए d1 वैल्यू बाहर करवा इन बोथ केसेस रे. ओके क्वेश्चन नंबर गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 3 4 -1 देखिए पास करुच्ची एंड पैरेलल टू द प्लेन यही प्लेन को पैरेलल हो. ओके तो कांस्टेंट टर्म चेंज करिए आम सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ द प्लेन
parallel to the given plane r vector dot 2i minus 3j plus 5k plus 7 is equal to 0 is r vector dot 2i minus 3j plus 5k plus d1 is equal to 0. d1 is equal to 0 देखा जाउछि ना d1 is equal to 0. okay, d1 is equal to 0. equation 1 where d1 is constant, to be calculated. okay, अच्छा given plane 1 required plane 1 passing through the point 3 4 minus 1 3 4 minus 1 pass करुछि, that is 3i cap plus 4j cap minus k cap यही पॉइंट देखिए पास करुछि. so equation 1 becomes कौन करिए हमें r वेक्टर जगह 3i plus 4j minus k पुट करो तो 3i plus 4j minus k डॉट आ जहाँ अच्छी r वेक्टर जगह ये वेक्टर पकाई. ओके 2i minus 3j plus 5k plus d1 is equal to 0. तो डॉट करो, दिस इज 6 minus 12 minus 5 plus d1 is equal to 0. तो d1 is equal to what? 11. d1 is equal to 11. Put the value of d1 in equation 1. Put the value of d1 in equation 1. We get required equation of the plane. That is r vector dot 2i minus 3j plus 5k plus 11 is equal to 0. Plus 11 is equal to what? 0. okay, देखो टिके देखाओ तो चेक करो तो. ओके solution, find the equation of the planes parallel to the plane 6x minus 3y minus 2z plus 9 is equal to 0 and at a distance 2 from the origin. means ये गोटे प्लेन आंक भीतर डिस्टेंस केते अछि कहूँ 2 डिस्टेंस होछि कहूँ. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स. तो प्लेनटा ये हमर गिवन प्लेन, तो प्लेनटा एपट रही पारे कि प्लेनटा एपट भी रही पारे. ओके मीन्स एपट रही पारे प्लेनटा कि एपट भी रही पारे प्लेनटा है. ठीक अच्छी. सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन parallel to the given plane parallel to the given plane 6x minus 3y minus 2z plus 9 is equal to 0 is 6x minus 3y minus 2z plus k is equal to 0. सब समान रहिबा, खाली कांस्टेंट टर्मटा चेंज हो. where k is constant to be calculated. Okay, where k is constant to be calculated. We have a formula. This is equation 1 and this is equation 2. We have a formula
distance between two parallel planes, distance between two parallel planes, parallel planes means difference between their constant term divided by square root of a square plus b square plus c square. तो implies k minus 9 d2 minus d1 mod by square root of 6 square plus minus 3 square plus minus 2 square is equal to 2. This is the distance between two parallel planes. Distance between two parallel planes given parallel planes. ये देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन के 2 दिखाई। तो इम्प्लाइज k माइनस 9 मोड डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2। तो k माइनस 9 मोड इज इक्वल टू 14 इम्प्लाइज k माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 14। तो इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 9 प्लस और माइनस 14। तो पुट द वैल्यू ऑफ k तो इज इक्वल टू व्हाट? तो 9 प्लस 14 23 और माइनस 5। ओके, टेकिंग पॉजिटिव साइन द प्लस और कौन माइनस 5। पुट द वैल्यू ऑफ k, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 वी गेट 2 number of planes, 2 number of planes. Okay, and they are 6x minus 3y minus 2z plus 23 equal to 0 or 6x minus 3y minus 2z minus 5 is equal to 0. ओके, दुईटा प्लेन पाइला आम गोटे एटा गिवन प्लेन। तो ये फास्ट प्लेन और ये दुईटा प्लेन है एपट रही प्लेन राइट साइड रही गोटे प्लेन लेफ्ट साइड रही कि डिस्टेंस 2। ओके, फाइंड द shortest distance of the point 25 minus 3 from the plane r vector dot 6i minus 3j plus 2k is equal to 4 in both vectorial and Cartesian form. Okay, तो solution vectorial form, vectorial form. Okay, let a vector is equal to 2i plus 5j minus 3k. This is the a vector, 2i plus 5j minus 3k. Okay, n vector is equal to, this is the n vector, r dot n is equal to d, r dot n is equal to d, 6i minus 3j plus 2k, d is equal to 4. Okay, means r vector dot n vector is equal to d. तो r vector dot 6i minus 3j plus 2k is equal to 4. तो कंपेयर कर ले, कंपेयरिंग वी गेट n इज इक्वल टू दिस, d इज इक्वल टू दिस. ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू फ्रॉम द पॉइंट a vector to the plane n vector dot r vector is equal to d is mod of n dot a minus d divided by mod n. ओके, तो व्हाट इज mod n? तो n डॉट a फर्स्ट बाहर कर दियो इज इक्वल n डॉट a. n डॉट a मीन्स 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 मीन्स लिखी दूची 6i माइनस 3j प्लस 2k डॉट 2i प्लस 5j माइनस 3k minus d, d means what? D means 4 from mod by mod of 6i minus 3j plus 2k. Okay, so is equal to 6 into 2 12 minus 15 minus 6 minus 4 mod by square root of 6 square plus minus 3 square plus 2 square. तो 12 15 minus 3 minus 13 mod by 7 is equal to plus 13 by 7. कहीं लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, तो minus 13 मोड टाइम आस प्लस 13. दिस इज द vectorial form. Next
कौन करिया कार्टेशियन फॉर्म नेक्स्ट कौन देखो कार्टेशियन फॉर्म नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म तो लेट p ब्रैकेट 2, 5, -3 and r vector dot 6i minus 3j plus 2k is equal to 4. तो r is equal to xi plus yj plus zk dot 6i minus 3j plus 2k is equal to 4. तो 6x minus 3y plus 2z minus 4 is equal to 0. Plane. Therefore, distance perpendicular distance from the point 2 5 minus 3 to the plane 6x minus 3y plus 2z minus 4 is equal to 0 is mod of 6 x जगह x1 पड़ो x जगह 2 minus 3 into 5 plus 2 into minus 3 minus 4 mod divided by square root of 6 square plus minus 3 square plus 2 square. Okay, कौन अच्छी फार्मूला mod of ax1 plus by1 plus ez1 minus d by square root of a square plus b square plus c square यही फार्मूला यूज करा है तो इज इक्वल टू 12 minus 15 minus 6 minus 4 mod by 7 is equal to 13 by 7. Okay, 13 by 7. This is the perpendicular distance from the point to the plane in both vectorial and Cartesian form. Okay. Next, equation of plane passing through 2 points and perpendicular to a given plane. Okay, 3 condition. Equation of plane passing through 2 points. 2 point is the condition and perpendicular to a given plane. A third condition. Okay. So equation of plane. Equation of a plane passing through 2 points capital A bracket x1 y1 z1 and capital B bracket x2 y2 z2 and also perpendicular to a given plane and also perpendicular to a given plane. Okay, plane a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0. Okay. So let the equation of the plane passing through the point capital A bracket x1 y1 z1 is given by a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0, where a b c are known as direction ratio of the normal to the plane and they are unknown quantity. a b c are known as unknown quantity जागो. ओके, अच्छा तो नेक्स्ट कौन करिबा since the plane 1 passing through the point B bracket x2 y2 z2, therefore second point satisfy the equation of the plane 1. Therefore equation 1 becomes a into x2 minus x1 x जगह x2 बढ़ी गला plus b into y2 minus y1 plus c into z2 minus z1 is equal to 0. equation 2 because second point satisfy कर जी काहे को first
प्लेन को सैटिस्फाई करुच्ची ओके also given that the required plane 1 is perpendicular to the given plane a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0. So by condition of perpendicularity a into a1 plus b into b1 plus c into c1 is equal to 0 means a into a1 है plus b into b1 plus c into c1 is equal to 0 okay this is equation 3 तो हमारा abc अननोन क्वांटिटी तो एलिमिनेटिंग abc कर दबा eliminating a comma b comma c from equation 1 comma 2 and 3 we get in determinant form पाइबा determinant form रे फर्स्ट a रो कोफिशिएंट देखो a रो कोफिशिएंट है x minus x1 नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन a रो कोफिशिएंट x2 minus x1 थर्ड इक्वेशन a रो कोफिशिएंट a1 ये लगा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम b रो कोफिशिएंट y minus y1 y2 minus y1 एटा है कौन b1 नेक्स्ट c रो कोफिशिएंट z minus z1 z2 minus z1 c1 is equal to 0 तो ये जो एक्सपांड करवा आम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई दिस इज नोन एज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज नोन एज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज नोन एज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन ओके रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन तो ये ला क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13b रो क्वेश्चन नंबर 4 रो बी बिट है एक्सरसाइज 13b रो क्वेश्चन नंबर 4 रो बी बिट 4b दिया देख गिवन अच्छी x1 y1 z1 दिया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 minus 3 1 तो 2 minus 3 1 एंड सेकंड पॉइंट minus 1 1 minus 7 minus 1 1 minus 7 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन x minus 2y plus 5z x minus 2y plus 5z plus 1 is equal to 0 यही आंसर करिवो एक्सपांड करिवो डिटो यही आंसर करिवो हला सेम ही करिवो ओके क्वेश्चन नंबर 4 रो बी 4b देखा हो नहीं 4b है क्वेश्चन नंबर 4b करिवो है एटा को बेस करिवो ओके दिस इज द होमवर्क find the equation of the plane passing through the points 2 minus 3 1 and minus 1 1 minus 7 and perpendicular to the plane this है जहाँ जो नोटा कहली ताकू बेस करी ओके टाइप इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स दुईटा प्लेन को परपेंडिकुलर होची ओके गोटे प्लेनटा दुईटा प्लेन को परपेंडिकुलर होची गोटे फिक्स्ड पॉइंट दिख पास करुच्ची तार इक्वेशन बर्तमान बाहर करवा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू कैपिटल ए ब्रैकेट x1 y1 z1 इज given by a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0 equation 1 where abc are unknown quantity we can find by given conditions
or using given conditions. Since the required plane 1 is perpendicular to the given planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal 0. So by condition of perpendicularity, first by a into a1 plus b into b1 plus c into c1 equal 0. Equation 2, a into a1 plus b into b1 plus c into c1 is equal to 0. Theta plane perpendicular means semanଙ୍କର direction ratio और product sum टा कौन आसीबो 0 आसीबो. Similarly first plane also perpendicular to second plane a into a2 plus b into b2 plus c into c2 is equal to 0. Equation 3 सेट भी पाउथला इक्वेशन 3 एडी पाउथला इक्वेशन 3 पाइल. तो एलिमिनेटिंग ए बी सी सेम जिनस एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get in determinant method first a रो कोफिशिएंट x minus x1 here a रो कोफिशिएंट a1 here a रो कोफिशिएंट a2. नेक्स्ट b रो कोफिशिएंट y minus y1 नेक्स्ट b रो कोफिशिएंट b1 नेक्स्ट b रो कोफिशिएंट b2 नेक्स्ट c रो कोफिशिएंट z minus z1 c रो कोफिशिएंट c1 c रो कोफिशिएंट c2 इज इक्वल टू 0. एटा को हम एक्सपांड करले हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हला कि व्हिच इज द रिक्वायर्ड equation of the plane. Okay, तो आपको बेसिक क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 13b रो क्वेश्चन नंबर 4 रो डी बिट कौन देख फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, 2 and perpendicular to the given planes x plus 2y plus 2z is equal to 5, x plus 2y plus 2z minus 5 is equal to 0 and another plane 3x plus 3y plus 3y minus plus 2z minus 8 is equal to 0. तो सेम आ भाया ही करिवो एटा को एक्सपांड करिवो. ओके, तो तुम कौन आसला कहल होमवर्क रहा कौन होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 डी एक्सरसाइज 13b रो क्वेश्चन नंबर 4 रो डी बिटा करिवो हला 4 रो डी बिट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P having coordinate ABC on the coordinate planes. कोऑर्डिनेट प्लेन मीन्स xy प्लेन, xz प्लेन, yz प्लेन. ओके, तो ठीक देख लीजिए तो ये है आमर दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. तो गोटे पॉइंट है P, तो ये है आमर xy प्लेन, ये है xz प्लेन, ये है yz प्लेन. दिस इज xy प्लेन, दिस इज xz प्लेन एंड दिस इज yz प्लेन. ओके, तो गोटे पॉइंट P रहा तो पॉइंट एट देख लिखा सहज नुहे तो कौन लिखा एट लिखा P हैविंग कोऑर्डिनेट A B C. तो P रु ड्र कराई परपेंडिकुलर क्या XY प्लेन को. ओके, जो पॉइंट रे मीट कला तार कोऑर्डिनेट हम A B 0 मीन्स x रहिबो y रहिबो z टा 0 रहिबो. तो एटा कौन ना मनकर दिस इज A पॉइंट भाव. नेक्स्ट कौन करिया P रु ड्र कर परपेंडिकुलर क्या YZ प्लेन को. ये YZ प्लेन, तो ये y रहिबो z रहिबो x टा 0 हो तो y है B z है C. नेक्स्ट P रु ड्र कर परपेंडिकुलर क्या XZ प्लेन को. ये कैपिटल B पॉइंट, ये कैपिटल C. दिस इज कैपिटल C
तो ये कौन रही दिस इज एक्स रेड रईटा 0 हो एक्स मीन्स ए वाई मीन 0 जेडटा कौन आसला सी। तो यही 3टा पॉइंट देखिए आम इक्वेशन ऑफ प्लेन पास कर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ओके। यही 3टा पॉइंट देखिए आम कौन करवा प्लेनटा आमर पास कर ओके। सॉल्यूशन ताल देख टिके गिवन दैट P ब्रैकेट रे A B C be any point on space draw perpendicular from P having coordinate A B C on XY plane meet at capital A B 0 on YZ plane meet at capital B having coordinate 0 B C on XZ plane meet at capital C having coordinate A 0 C. The required plane passing through A B C we get determinant for x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 is equal to 0. तो ये है x1 y1 z1 तो ये है x2 y2 z2 and this is x3 y3 z3 put the value okay ताले पकई दे value जगह आनिगिरी तो is equal to determinant for x minus x1 is a x minus a y minus b z minus 0 okay. Next 0 minus a b minus b c minus 0 next a minus a 0 minus b c minus 0 is equal to 0 is equal to 0. एटा को आम कौन करिए एक्सपांड करिया ओके। तो इम्प्लाइज x माइनस ए दिस इज y माइनस b दिस इज z माइनस ए 0 c 0 माइनस b c इज इक्वल टू 0 एक्सपांड कर x माइनस ए इंटू फर्स्ट रो छाड़ दिल फर्स्ट कलम छाड़ 0 प्लस बी सी प्लस माइनस y माइनस b फर्स्ट रो छाड़ सेकेंड कलम छाड़ माइनस ए सी माइनस 0 प्लस z इंटू फर्स्ट रो छाड़ सेकेंड थर्ड कलम छाड़ दिस इज ए बी माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और मल्टीप्लाई कर दियो एक्स बी सी माइनस ए बी सी माइनस वाई एस प्लस वाई एस सी माइनस माइनस प्लस प्लस वाई एस सी माइनस ए बी सी माइनस 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 प्लस जेड ए बी इज इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज एक्स बी सी प्लस वाई एस सी प्लस जेड ए बी इज इक्वल टू 2 ए बी सी. तो डिवाइडिंग बोथ साइड by ABC we get x by a plus y by b plus z by c is equal to 2. This is the required equation of the plane. Which is the required equation of the plane? Okay. Instead of ABC some values are given, तो put a b c रे value है ला. ए बी सी जगह किसी वैल्यू भी दे पारे तो ए बी सी रे वैल्यू पका दो ओके.
दिस वन मार्क क्वेश्चन गोटे देख टे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स 2x minus 2y plus z plus 1 equal 0 and 4x minus 4y plus 2z plus 3 is equal to 0 means ये है दुईटा प्लेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर तो ये है डिस्टेंस ये डिस्टेंस बर्तमान बाहर करिया कहूँ तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स ओके। अच्छा फर्स्ट देखो x y z रो कोएफिशिएंट जाक समान करिया पड़िबो सेम अछि कि नाही किंतु पार्ले कि देखो 2/4 इज इक्वल टू -2/-4 इज इक्वल टू 1/2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 फॉर्म अच्छी तो दे आर पैरेलल। तो फास्ट आम कौन करिया पड़े ना कोएफिशिएंट इक्वल करिया पड़ो तो कोएफिशिएंट इक्वल करिया केमिति ना इठी अछि 4 इठी अछि 2 तो 2 डी मल्टीप्लाई करे कोन हो इक्वल हो ओके। सॉल्यूशन तो इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन्स of the given parallel planes 2x minus 2y plus 1 is equal to equation 1 4x minus 4y plus 2z plus 3 is equal to 0 2 they are parallel multiplying 2 with equation 1 on both साइड ओके कौन आसो ना 4x minus 4y plus 2z plus 2 is equal to 0 कहीं मल्टीप्लाई कले ना ए को इक्वल करने मल्टीप्लाई कले ए को इक्वल करने एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट को इक्वल करने मल्टीप्लाई कराला है। नेक्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two parallel planes ax plus by plus cz plus d1 is equal to 0 and ax plus by plus cz plus d2 is equal to 0 is mod of d2 minus d1 divided by square root of a square plus b square plus c square okay। तो here a is equal to 4 b is equal to -4 c is equal to 2 d1 is equal to 3 d2 is equal to 2 so put the formula therefore shortest distance is equal to mod of 3 2 minus 3 divided by square root of 4 square plus -4 square plus 2 square तो 1 2 minus 3 means -1 मोटा plus 1 divided by 16 plus 16 32 plus 4 36 means 6 okay। तो ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। नेक्स्ट कंडीशन फॉर 4 points to be coplanar कंडीशन फॉर 4 points x1 y1 z1 comma x2 y2 z2 comma x3 y3 z3 and x4 y4 z4 to be coplanar अच्छा 3 points already we find equation of plane passing through 3 points तो passing through 3 points means determinant form x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 is equal to 0 it is equation of plane passing through 3 points if the fourth point satisfy the given satisfy the plane then x4 y4 z4 means all 4 points are lie in a single plane जदि फोर्थ पॉइंट साटिस्फाई कर प्लेन टाको ताले 4टा पॉइंट गोटे पॉइंट रे कौन हे रे फास्ट आम कौन 3टा पॉइंट नहीं प्लेन इक्वेशन बाहर करते फोर्थ पॉइंट से पुट कल एलएच पार्ट रे पुट कल इज इक्वल टू आरएच पार्ट आसीगला ताले कौन हम 4 points आर कोप्लानर ओके। तो तुम डायरेक्ट फर्मुला मन रख दिस इज x minus x1 थिला x जगह x4 पकई दियो x4 minus x1
y4 minus y1, z4 minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equal to 0. ये 0 आसीगला ताले कौन हम 4 points to be co-planar. ओके, तो ये ला क्वेश्चन नंबर 6 13B एक्सरसाइज एलिमेंट्स 13 एलिमेंट्स मैथमेटिक्स 13B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, verify whether the 4 points are co-planar or not. 1 2 3 -1 1 0 2 1 3 1 1 2 x1 y1 z1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y z3 x4 y4 z4. Put the value in this determinant and find the value of determinant. If the value of determinant 0, then 4 points are coplanar, otherwise they are non-coplanar. Okay, the solution so here x1 is equal to 1, y1 is equal to 2, z1 is equal to 3, x2 is equal to -1, y2 is equal to 1, z2 is equal to 0, x3 is equal to 2, y3 is equal to 1, z3 is equal to 3, x4 is equal to 1, y4 is equal to 1, z4 is equal to 2. Okay, तो कौन आछे हमर कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी डिटरमिनेंट फॉर x4 minus x1 1 minus 1 0 x4 minus x1 y4 minus y1 1 minus 2 minus 1 z4 minus z1 2 minus 3 minus 1. Okay, x4 minus x1 y4 minus y1 z4 minus z1. Next x2 minus x1 minus 2 minus 1 minus 1 y2 minus y1 minus 1 z2 minus z1 minus 3. Next x3 minus x1 1 y3 minus y1 minus 1. Okay, z3 minus z1 0. आपको एक्सपांड करिबे. ओके, यदि 0 आसीगला ताहले कोप्लानर न आसले नॉन कोप्लानर. तो ठीक अच्छी, तो इज इक्वल टू दिस कौन आसला फर्स्ट 0 इंटू समथिंग 0 इंटू फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट रो छलो सेकंड फर्स्ट कॉलम छलो तो -0 -3 तापर प्लस माइनस प्लस -1 इंटू फर्स्ट रो चलो सेकंड कॉलम चलो 0 प्लस 3 -1 इंटू प्लस माइनस प्लस -1 इंटू दिस इज 2 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 0 -3 अगेन 0 हो गला माइनस दिस इज +1 सॉरी दिस इज +1 कहीं प्लस माइनस प्लस. ओके, तो +1 तो +3 इज इक्वल व्हाट 0. तो +3 -3 कैंसल नहीं. देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोप्लानर. गिवन पॉइंट्स आर कोप्लानर. ओके, गिवन पॉइंट्स आर कौन कोप्लानर. ओके, find the angle between two planes x plus 3y minus 5z plus 1 equal 0 and 2x plus y minus z plus 3 is equal to 0. Okay, the solution angle between two planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal 0 is given by theta is equal to cos inverse a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square. So here a1 is equal to coefficient of x 1, b1 is equal to 3, c1 is equal to -5, a2 is equal to 2, b2 is equal to 1, c2 is equal to -1, a2 equal to 2, b2 is equal to 1, c2 is equal to -1. So therefore theta is equal to theta with angle between two planes, theta is equal to cos inverse a1 a2 2 plus b1 b2 3
plus C1 C2 5 divided by square root of 1 square plus 3 square plus minus 5 square into square root of 2 square plus 1 square plus minus 1 square. So is equal to cos inverse 5 plus 3 8 plus 2 10 divided by 25 plus 9 34 plus 1 35 25 plus 9 34 plus 35 into 4 plus 1 plus 1 5. Okay, so is equal to cos inverse 10 divided by root 35 means root 7 into root 5 into root 5. So is equal to cos inverse 10 by root 7 into 5. So 5 2 the, so is equal to cos inverse 2 by root 7. Cos inverse 2 by root 7. Here angle between two given planes. Okay. Another question, prove that the line joining 1 2 3 2 1 minus 1 intersect the line joining minus 1 3 1 and 3 1 5. This is A point, this is B point, this is C point, this is D point. Prove करिया को होची AB intersect CD. अच्छा, AB intersect CD means AB and CD always lies in a single plane. If two lines lie on a single plane, then either they are parallel or they are intersect. Okay, जदि दुईटा लाइन गोटे प्लेन उपर अच्छी ताले से माने either parallel हो पारती नहले intersect कर पारती. तो parallel केतले हेबे ना सेमानकर DRS जाक proportional हा पड़े. If the direction ratios are proportional, then they are parallel, otherwise they must intersect at infinity. Okay, तो ठीक अच्छी. तो first prove करिया पड़े हमको whether the two lines are coplanar or not. Okay, two lines are coplanar means 4 points should be lie on a single plane. Okay, solution. Let A is equal to 1 2 3, B 2 1 minus 1, C minus 1 3 1, D 3 1 5. Okay, अच्छा. First proof whether the 4 points are coplanar or not. Coplanar or not. First check करिया पड़े whether the 4 points are coplanar or not. Means AB गोटे line, CD गोटे line. तो AB CD रे गोटे प्लेन रहिबो ताहारे coplanar हबो. तो ठीक अच्छी. तो ये ला x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y z3 x4 y4 z4. Okay, तो condition for coplanarity. Condition for coplanarity. नहीं determinant for x4 minus x1, x4 minus x1, 3 minus 1 2, y4 minus y1, 1 minus 2 minus 1, 5 minus 3 2. Next x2 minus x1 1, y2 minus y1 minus 1, z2 minus z1 minus 2. Next x3 minus x1 0, sorry minus 2, x3 minus x1. Next 3 minus 2 2, 3 minus 2 1, 3 minus 2 1, 1 minus 3 minus 2, 1 minus 3 minus 2. एटा को एक्सपांड करो. एटा कौन करिया हमें एक्सपांड करिया देखो टिके. ओके, तो ठीक अच्छी. देखो फर्स्ट रो थर्ड रो देखो इज इक्वल टू 0 बिकॉज सिंस फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर प्रोपोर्शनल है ना. 2 by minus 2 is equal to minus 1 by 1 is equal to 2 by minus 2. So therefore they are 0. They are determined 0. Hence AB
Hence the points A, B, C, D are coplanar. So this implies the line joining AB and CD also coplanar. CD also कौन coplanar. अच्छा तो ए बी लाइन सी डी लाइन कोप्लानर हो गले. द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड सी डी आल्सो कोप्लानर. अच्छा ए बी इफ द टू लाइन्स लाई ऑन ए सिंगल प्लेन देन either they are parallel or intersect. If the two lines lie on a single plane, then either they are parallel or intersect. तो केमी जानिबा ना डीआर से बाहर करिया पड़िबो. यदि डीआर से प्रोपोर्शनल है दे आर पैरेलल, यदि नॉट प्रोपोर्शनल दे आर कौन इंटरसेक्ट. तो डीआरएस ऑफ ए बी, तो डीआरएस ऑफ ए बी, तो बी रु ए माइनस करो, बी रु ए माइनस करो. 2 - 1 1 1 - 2 -1 -1 -3 -4. 2 - 1 1 1 - 2 -1 -1 -3 -4. This is -4. ओके यार काम किसी ना अवश्य. नेक्स्ट डीआरएस ऑफ सी डी बाहर करो. डीआरएस ऑफ सी डी 3 - 3 + 1 4 1 - 3 1 - 3 -2 5 - 1 4. देख तो 3 + 1 4 1 - 3 -2 5 - 1 4. The DRS of AB since as DRS of AB not proportional to the DRS of CD, hence AB line not parallel to CD. That implies AB line must intersect CD at infinity. CD must intersect CD. सला दित्त काम must intersect CD. Okay. Next class we shall study system of planes. Okay.